श्री पंचमुखी हनुमत कवचम्। ओम श्री पंचवदनायांजनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान देवता। ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रौं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुडवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृतान्तरम्। उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभूपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खड्वांगं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। विन्धिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टां तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतुमुखं। पञ्चाशमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कविराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैर्रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशंकराय स्वाहा।
ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन् मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडासवक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखीटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हरं खड्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिरलङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गद लक्ष्मणमहाकपिसैन्य प्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रसादाय षड्प्रयोगागम पंचमुखवीर हनुमन्त्र जपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं ngं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं सं 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 हं लं सं फट् स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय
महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकनीडाकन्यान्तरिक्ष ग्रहपरतयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजन निर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तस्य महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीर्यस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षितत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वमामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा श्रीपञ्चमुखी हनुमत्कवचम् ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकां क्रौं कवचां क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुडुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृतान्तरम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभूपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं
ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं विन्धिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टां तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाक्षरमयं देवं हनुमद्विश्वतुमुखं पञ्चाशमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कविराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैर्रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायूर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडासवक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखैटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खड्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिरलङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गद लक्ष्मणमहाकपिसैन्य प्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रसादाय षड्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्त्रमन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वषट् स्वाहा
ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खैं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं ngं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं सं 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 हं लं सं फट् स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्रीरामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकनीडा कन्यांतरिक्ष ग्रह परत यंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं अष्टवारं पठे नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नौवारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तस्य महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्री आंजनेय स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतं
अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीर्यस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्योषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षितत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वमामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन
शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धन। श्रीपञ्चमुखी हनुमत्कवचम्। ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकां क्रौं कवचां क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुडवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभां द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृतान्तरम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभूपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं विन्धिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टां तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतुमुखं पञ्चाशमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कविराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैर्रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखायादिवराहाय
सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायूर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडासवक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखीटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हरं खड्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गद लक्ष्मणमहाकपिसैन्य प्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रसादाय षड्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्त्रमन्त्र जपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं सं 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 हं लं सं फट् स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय
रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षसशाकनीडाकन्यान्तरिक्ष ग्रहपरतयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजन निर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तस्य महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीर्यस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षितत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वमामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा श्रीपञ्चमुखी हनुमत्कवचम् ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः ॐ अस्य श्री पञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रौं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः श्रीगरुडवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृतान्तरम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभूपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं
दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं विन्धिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवाम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टां तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाक्षरमयं देवं हनुमद्विश्वतुमुखं पञ्चाशमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कविराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैर्रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन् मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडासवक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखैटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खड्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिरलङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गद लक्ष्मणमहाकपिसैन्य प्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रसादाय
षड्प्रयोगागम पंचमुखवीर हनुमंत्र मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरिमर्कट मर्कटाय बम 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 वषड स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम कं खं गं घं ngं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं सं 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 हं लं सं फट् स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्रीरामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकनीडाकन्यांतरिक्ष ग्रह परत यंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नौवारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तस्य
महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकाम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूताम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ह्रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीर्यस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्योषधिसमन्वितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्तवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षितत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा
तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वमामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा।